चलो, so understood right? Conservation of mechanical energy, उसका बेस पे क्वेश्चंस वी आर डूइंग, स्टिल कंटिन्यूइंग जेई मेंस क्वेश्चंस वाला आई एम गिविंग. ओके, सपोज मान लो दिस इज इंक्लाइन प्लेन, एंगल इज 30 डिग्रीज एंड 10 मीटर्स है इंक्लाइन प्लेन का. ओके, ए ब्लॉक इनिशियली ट्रस्ट है, इधर से स्लाइड होते जा रहे हैं, स्लाइड होते जा रहे हैं, इधर से इधर तक देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, बट जाएगा जाएगा इधर स्प्रिंग है, अटैच्ड है, क्या होगा, ये ब्लॉक जाके कंप्रेस करेगा ना, कंप्रेस करेगा, एंड फ्रिक्शन इज फ्रॉम हियर टू हियर ओनली. ओके, हियर टू हियर ओनली फ्रिक्शन, इधर तक. उसके बाद अगर फ्रिक्शन नहीं है इधर तक कौन फ्रिक्शन इज देयर, एंड डिस्टेंस इज 2 meters. ओके, ही इज टेलिंग द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक हिट्स द स्प्रिंग, मतलब जाके ऐसा हिट करेगा ना, कितना कंप्रेस होगा मैक्सिमम, दैट ओनली आस्किंग, एक्स वैल्यू आस्किंग. So can we use conservation of mechanical energy means? No, right? So we have to use the formula to get x value, how much maximum. Normally करने से क्या होगा, when I drop, ये जाके जाएगा जाएगा हिट करके इधर रुक जाएगा, उधर इनिशियली इस साइड, बाद में पीछे आएगा, बट वो कितना कंप्रेस मैक्सिमम कर सकते हैं, we is asking. Right? Use this formula. Work done by non-conservative force, work done by external agent. The formula is work done by non-conservative force plus work done by external agent is equal to kf plus uf minus ki plus ui. This formula use करके we have to solve the question. Since here friction is there, right? Here work done by external agent is how much? Work done by external agent, we are not doing any work. Slide हो रहा है automatically. So work done by external agent is 0. Okay. इधर से इधर तक there is no friction. From here to here there is a friction. From here to here there is a friction, right? Tell me what is the formula for friction का work done कितना होगा? इधर से आया, इधर से आया, इधर से इधर तक जा रहे हैं ना, फ्रिक्शन इधर से इधर तक कर ले. So force in displacement, right? So minus Fs into N. This is a force, right? So work done is force into displacement, right? Displacement is how much? 2 meters. बाद में सब करेंगे. Force into displacement ये आया ना समझ में? Work done by non-conservative force from the total journey में कितना है? Force into displacement, right? इधर Fs into N S is equal to Kf. Can you tell me what is the kinetic, final kinetic energy? नीचे स्लाइड हुआ स्लाइड हुआ स्लाइड हुआ, उधर जाके कंप्रेस होकर रुक गया. So final kinetic energy is 0. Final potential energy is how much? When the spring got compressed, that it is stored as potential energy. And what is the formula for potential energy? Half kx square. Half kx square minus initially block is at rest. So initial kinetic energy is 0. And tell me initial potential energy is how much? एक ground से ऊपर है ना, some height is there. So what is the formula? mgh. We have two types of potential energies: gravitational potential energy, spring potential energy. Now substitute formula and solve. X value are defined. एक क्या होगा? mu s times of n, right? Or mu k, it is moving, right? By fs will take mu fk ले लेंगे. Okay, mu k times of n into s is equal to half k x square minus mgh. So now solve and find the value of x. All values are given. Is asking x value. Displacement is 2 meters because friction is from here to here only. So minus mgh, I'm bringing this side. mgh is equal to half k x square. इधर लेके आए तो plus mu k, n is equal to mg, right? So 5g into s is 2 meters. ठीक है. So substitute all values and find x.
Mu is 0.5. And K value they given as 100 Newton per Coulomb spring constant. Mano subscribe करो. Yes. So whenever friction come into picture, use this formula. In formula sheet I will send, and that way everything is there. This may also is there. Sir, okay, never mind. H will be like components लेने का. H will be how much? Sir, but sir, you know mgh is equals to half kx square plus mu k K. into ns. NS. N is nothing but a 5G only, right? Sir, why did fks? Oh, work. Okay. Work, right? So the mg will cancel only, right? So we can cancel it directly, right? No. Why MG get cancelled? ये बीच में है ना. Sir, I'm getting Oh, it's root plus. 6. कितना आ रहा है? Root 6. Wrong. H is how much? H will be 5. 5. Because 10 cos 30, 10 sin 30. So 10 sin 30 means 10 into sin 30 is 1/2, right? 5. So no always cut only given 5 into 50 into 5 is equal to half into 100 into x square plus 0.5 into 2 is 1. 1 into 5 5 into 10 is 50. A 50. So 50. So I got 50, 1 by root 10. 1/√10 ना. Yeah. देखेंगे इसका इसका कितना है ये कट चेक करो 5 into 10 50 50 into h is 5 250 right ठीक है 250 is equal to half into k is 100 50 x square plus mu k is 0.5 0.5 into 2 is 1 1 into 5 is 5 5 into 10 is 50 so 250 minus 50 root 200 Root 2. y root 2 x equal to root 4 is 2 is answer. तो मैं 250 is equal to 50x square plus 50 ये 50 इधर लेके आया 200 by 50 is 4 स्क्वायर किया तो 2 आएगा तो 2 is answer. See, we are using conservation of mechanical energy. When there is no friction, always use conservation of mechanical energy. Uy plus ki is equal to uf plus kf. From that you can find x value. From that you can find what are the h value. Everything you can find. When there is a friction, use this formula. आ जाएगा. Okay. चलो. try Sir, करो. how is work done by external zero? See, we are leaving the block, right? We are not taking the block to move from one place to other place. Automatically आ रहा है ना? So work done by external is always 0. हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच के लेके आ रहे तो देन ओनली वर्क डन का एक्सटेंशन यू यूज ओके तो मैं नो डाउट साइड ना ट्राई करो No, sir. चलो जेई में क्वेश्चंस करो अच्छे से a block of mass m okay he has given the figure I'll draw the figure m है स्प्रिंग से बंधा है ये सरफेस है स्मूथ सरफेस है देयर इज नो फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस हियर एनर्जी इज he told E is energy E is a kinetic energy kinetic energy E है again don't use half m इस करने लगा मत लगाओ E terms में लिखो okay so block of mass m moving with kinetic energy is E the block is moving with kinetic energy then क्या होगा definitely spring compress होगा ना E compresses a spring through a distance 25 centimeters ये compress करके 25 centimeters compress किया then उस टाइम में speed is halved मतलब velocity is getting halved तो tell me kinetic energy कितना होगा if velocity is halved kinetic energy कितना गुना कम हो जाएगा By 4. by 4 so final Sir, once can you go to the previous slide once? So how is it 2? displacement right हाँ इधर why 250 minus 50 is 200 right 200 by 50 is 4 square is 2 Sir, in the it's plus I can't cut.
आया? No, wait, what? Sir, I have a doubt. Sir, चलो, if 50 into 5 is equal to half into 100 into x square. हाँ प्लस 50. Yeah, the 50 and 50 you cut, right? नो 50 मत करो. मैं क्या किया? 50 into 2 5 is 250. अब 50 x square Oh, 50 लगा, इसे रखा. ओके, आया? yeah, I got it. चलो, हाँ, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज E. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इफ द स्पीड इज हाफ्ड, हाफ m v स्क्वायर, राइट? v इज v by 2. v by 2 होल स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी by 4 हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी गॉट डिक्रीज्ड. समझ में आ रहा है? इफ द वेलोसिटी इज गेटिंग हाफ्ड, देखो, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर. इसको E बोला. ओके, सो क्या बोला ना वो? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? kf कितना होगा? हाफ m, स्पीड इज हाफ्ड. स्पीड इज हाफ मीन्स v by 2 हो गया होल स्क्वायर. सो कितना होगा? हाफ m v स्क्वायर by 4. एंड हाफ m v स्क्वायर इज नथिंग बट E ओनली. सो E by 4 हो गया. काइनेटिक एनर्जी गॉट डिक्रीज्ड. The value of spring constant k value is asking is how much? Will be NE. So k n value is how much? He's asking n. So spring constant k. So he told the value of spring constant is used. Spring will be NE. K equal NE he has given. He's telling to find n value in the question. So what is n m minus 1? N na. N is we have to find Newton meter per meter. Okay. Newton per meter. Units k ka units. Jyotish, from here to here is a smooth surface. There is no friction. We can apply happily conservation of mechanical energy. From that we can find compression. कुछ भी कर सकते हो. Okay. So we know potential energy is already you know. Kinetic energy is you know. Substitute. So what is the formula? Ui plus Ki is equal to Uf plus Kf. Initial potential energy is So initially there is no 24. compression, right? 0. And ground में object is at ground में, there is no potential energy. Plus kinetic energy, initial kinetic energy is E only, is equal to when it got compressed to x. So what will be the final potential energy? Half kx square. So 24. And kinetic energy, final kinetic energy is E by 4. कितना 24. देखेंगे? No, substitute the values and get the answer. So find k value from this. So now 4 is sort of like E minus E by 4 is equal to half k x square. So kitna 3E by 4 is equal to half 24 k only. x square. So 2 to the 4. So 3 by 2E is equal to kx square. Yeah, sir, k is 0.25. K is No, not k, 0.25. sorry, x is 0.25. You have to substitute 24 is the answer. Yeah. You have to find k, yeah. K value we have to find, right? So now X distance. is 0.25, right? So 0.25 whole square and then. Yes. Yeah, centimeters to meters you have to convert. Okay, convert kya? आपको प्रणव try कर रहा है? Sir, I have a doubt. Tell me. Sir, how is the initial potential energy 0? Initially there is no compression of the spring, right? Initially it is moving, right? Initially there is no compression of the spring. When there is no compression, there is no potential energy. Potential energy is normal position में. So क्या होगा? 3 by 2E is equal to k times of x square. X is 25 centimeters, right? So divided by 100 किया तो 0.25 or 25 into 10 to the power of minus 2 whole square. So if you solve, k value will get as कितना 24E आया, ऐसा आया. So compare with NE. So therefore E cancel, N equal to 24 is answer. JEE means questions. So properly solve. Conservation of mechanical energy आपको idea आने का. So here देखो it is kinetic energy is there,
potential energy is there, compression, so conservation of mechanical energy. By seeing the question you should understand conservation of mechanical energy लगाएंगे बोल के. Okay, करेगा तो मेरा हार्ड लग रहा है ना? हाँ करो. Numerical based questions is all. So this question is 2021. मेरे ख्याल से मिस्टेक करेगा. A uniform chain of length 3 meters and mass 3 kg overhangs on a smooth table with 2 meters laying on the table. ऐसा टेबल है. 2 meters are lying on the table. So remaining total meters is 3, right? So remaining 1 meter will be done. Okay. If the K is the kinetic energy of the chain in joules as completely slips off the table, then the K value, मतलब kinetic energy कितना है of मतलब क्या होगा when the chain is a table, right? When the chain completely slips off, इधर से निकल रहा है. So I इधर got क्या 80. होगा? हाँ I got क्या? 80. 8 या do wrong. ऐसे करो. When completely slips off, he's asking what is the kinetic energy, is how much. So like kinetic energy should be just find the delta, like initial, final minus initial. Why? Like final potential energy minus initial potential energy. No, why final potential measure initial potential energy? हाँ करो, try करो. Initially rest है, table में ये rest है, थोड़ा धक्का दिया, then only ये पूरा smooth है, is falling down. At this falling time में is asking what is the kinetic energy. Numerical based है करो. क्वेश्चन में स्टूडेंट ज्योतिष, ये चेन है, चेन को थोड़ा धक्का देने से स्लिप होता है क्या ना? When it's crossing this पूरा स्लिप होके नीचे गिरने समय kinetic energy समझ asking उस सरफेस से. मना करो, देखते चैलेंजिंग क्वेश्चन विदाउट सीइंग करो, कॉपिंग करो. Sir, 10. No, sir, I'm trying to find out the height. या ट्राई of करो. the Sir, 10. नो, या तो पूरा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम आ जाएगा. So what will be the height of the when I use MGH? What will be the height? 2021 JEE means you will do. Right. We done one chain problem also. That time height क्या लिया वही ले रहे थे. Sir, Sir, thank you, that's sir. not working. हाँ? Sir, center of mass one more. I don't know. आंसर बोलो. Sir, that one is not working. Sir, 40. I'm getting Sir. 30. देखेंगे सबका. So I got 40. Okay. So I'm getting 30. आंसर बोलो किसका राइट है बोलो. आप Yeah. ट्राई करेगा, चेक करेगा. No, sir, tell it. Sure से Yeah. 40 is answer. Okay, good. देखो ui plus ki is equal to uf plus kf. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मासेस का कितना है क्या है देखो. 2 मीटर यू नो लीनियर मास, राइट? सो 3 मीटर्स का 3 kg है तो 2 मीटर्स का 2 kg एंड 1 मीटर का 1 kg. कितना मालूम है ना? एंड 3 मीटर्स का 3 kg मास है. ओके, नाउ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच? इसका तो दिस इज ग्राउंड, आई एम टेकिंग दिस एज रेफरेंस एज ग्राउंड. ये रेफरेंस है, ग्राउंड रेफरेंस.
ओके, इसका पोटेंशियल, इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है. ओके, एंड दिस 1 kg मास इज लाइंग हियर, राइट, सेंटर ऑफ मास, राइट, आई टोल्ड, राइट, सेंटर ऑफ मास का. एंड कितना हाइट में है ये वाला? टोटल इज 1 मीटर, दिस लेंथ विल बी 1/2. तो व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर दिस पोटेंशियल एनर्जी? एक ग्राउंड से बिलो है ना, बिलो वाला माइनस लेने का. माइनस लिया, माइनस इज इंपॉर्टेंट. सो माइनस m, and m is g, m g h, h is 1/2. क्या है समझ में? मास इज सेंटर ऑफ मास में, एंड हाइट इज 1/2, एंड g is 10 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is 0. I wrote it as 1, I wrote it as 3 instead of 1. Final potential energy 3 kg mass is lying here, and 3 meters means it is 3/2 distance में रहेगा. So mgh is minus, ground से below है ना, minus mgh is 3/2 plus kinetic energy is k. This only we have to find. So minus 515 minus 45 plus 45 आएगा इधर. Okay, k. So k equal to 40 joules. Very good. Very important. These all are, you know, ये सब कुछ आया तो then only you can able to Please solve. move for a second. Yeah. Sir, I took the only mistake I did was for potential energy. I took the 1 kg as 3 kg whole. So I got it as 15. How we chain का we should be very careful. Center of mass is varied for a potential energy. आराम से happily we can take the center of mass concept. Okay. चलो. कब बेटा ज्योतिष? Yeah. Try करो. Many questions I am giving. Why? Because थोड़ा practice किया तो अच्छा रहेगा. Then we'll go for power. A spring gun having spring constant 100 Newton per meter. A small ball B of 100 grams is put in the barrel. ये barrel है, गन का रहता है ना, वो बुलेट, वो क्या डालेगा, बॉल डालेगा अंदर, प्रेस करने से बॉल विल बी कमिंग आउट, राइट. दिस इज बैरल. इधर बॉल इधर से प्रेस कर रहे हैं, बॉल लगा रहे हैं इनसाइड, एक गन है, ऐसा मैं प्रेस करने से स्प्रिंग विल कम दैट साइड, राइट. ओके, बाय कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इज 0.05 meters में कंप्रेस किया. ओके, there should be a box placed at distance d from the ground so that the ball falls in it. So मान लो there is एक बॉक्स है ग्राउंड में बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है. ओके, ये सर्टेन इधर से डिस्टेंस d है, इधर से इधर तक d डिस्टेंस है, ये बॉक्स है. ओके, सो दैट फायर करने से क्या होगा, दिस बॉल विल शुड फॉल हियर इन द ग्राउंड. Ball leaves the gun horizontally. See, ball leaves the gun horizontally at a height 2 meters above the ground. देखो ये वाला कितना ग्राउंड से 2 meters above height में है, and is leaving horizontally. याद है ना, पोजिटल मोशन में हॉरिजॉन्टल में से जा रहा है. ओके, द वैल्यू ऑफ डी इज समझ, डी, ए डी क्या बोलते हैं मालूम है? हॉरिजॉन्टल पोजिटल मोशन में डी को क्या बोलते हैं? This is called range. So indirectly range find करने के लिए बोल रहा है. He's combining poietal motion with the conservation of mechanical energy. Try. Tell. Okay, then. Can you give options? A numerical based. Yeah. So can you give random options? Options से क्या लेना देना? Without knowing the options, then if you solve, then that's a great thing. Or I Right? can So can you tell formula ones? फॉर्मूला क्यों बोलो? क्या फॉर्मूला डालेगा? So टेल मी you नॉर्मली pass- रेंज का फॉर्मूला क्या था, याद है? So that formula. ओके, Sir, I know, sir. हाँ, U square sin 2 theta by g. u square sin 2 theta by g कौन सा है? ऑब्लिक पोजिटल मोशन का. ऑब्लिक का विच नॉट यूज, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पोजिटल मोशन. इधर नो फॉर्मूलास, आपको मेथड सो आई टोल्ड यू. Cos theta. कट ओनली इसका प्रणव. कभी भी you have to use the speed, distance is equal to speed in time, right? Indirectly, see, speed is equal to distance by time, right? Distance is equal to speed in time, multiply करो. time of flight find करो पहले. time of flight तो मालूम पड़ा फॉर्मूला, याद है ना? from height above height से Root time 2 of h flight by g. Root 2gh. root 2 g से है, root 2 h 2h by by g. g. हाँ यूज करो. time of flight is
√2h/g। ये यूज करने के बाद डिस्टेंस का स्पीड इन टाइम करने का। नो सॉल्व करो। स्पीड नहीं दिया, यू हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड स्पीड, बिकॉज वो स्प्रिंग को कंप्रेस किया, इट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। Spring potential energy is converted to kinetic energy. Just equate, you'll get the velocity. So can I use a bit of calculator, sir? I did a little longer method. हाँ यूज करो, चलो करो। Sir, I got 0.99. Sir, I got V as 2.5. Sir, I got V V as has root 2.5. हाँ रूट वाला। Oh, yeah, Sir, I got 0.99, so approximately 1. सो स्पीड इनटू टाइम आने के लिए स्पीड चाहिए। स्पीड कैसे आएगा? मैं बॉल को ऐसे कंप्रेस किया ना। Sir, is answer 1? यस, वन इज आंसर। हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। Spring potential energy is converted to kinetic energy finally. So half of cancel. So from this you can get velocity. Find velocity.
हाँ टेल आया आंसर बी आया ओके सो व्हाट इज द मेथड आपको हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर वी वैल्यू आ जाएगा वी वैल्यू आने के बाद आपको क्या करने का इसमें सर्च करो स्पीड इनटू टाइम किया तो आपको वी तो इधर है टाइम विल गेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सो आंसर इज 1 1 इज आंसर ओके चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे डन हो जाएगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल डन पूरा इसमें से हार्ड क्वेश्चंस वाले आई एम चूजिंग ओके so this they given as 10 meters and B is here actually like at 5 meters okay not 0.5 5 meters this is B okay so what is happening is a particle is placed at A एक particle है is placed at A of a frictionless track ABC frictionless track है ABC it is pushed slightly towards right थोड़ा push किया ऐसा push find its speed when it's reached to the point B अब जब रीच होगा ना पॉइंट बी में इधर स्पीड कितना है आस्किंग इधर टाइम में जी को 10 ले लो सो टोटल इज हाइट इज 10 मीटर्स सो जाएगा जाएगा स्पीड जाएगा 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 इधर कितना स्पीड है फ्रिक्शनलेस सरफेस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड सॉल्व So, oh, they gave the height and all. Okay. So, but they didn't give mass, right? No, mass will be get cancelled. So I got V as 10. Yes, correct. 10. Yeah, 10. अरे कैसे क्या आप अभी तक पूछा क्वेश्चन Square is equals to How mgh. do you remove K, sir? हम्म Sir, how do you remove K? इधर स्प्रिंग है क्या आपका विच पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट्स पे थोड़ा एक बार बीच में बाहर गया था ऐसा रहेगा ओके सो स्प्रिंग नहीं है आपके इस पर नहीं डालने का सिंपली इधर क्या है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh is equal to half mv square so try to find this velocity so 10 into 100 into कितना होगा g is how much 10 into h is how much initially 10 is equal to half into 200 right v square so v कितना है 10 आ रहा है हाँ इधर इधर आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इज राइट सो यूज दिस वन ऑलवेज देखो ज्योतिष व्हाट इज देयर इज नो फ्रिक्शनलेस राइट सो ui plus ki is equal to uf plus kf इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज आपको mgh प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इनिशियल बॉडी रेस्ट में इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन mghb बोलो ये h बोलो इनिशियल पॉइंट है प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर now m get cancel if I substitute ha के जगह में 10 so कितना 10 into 10 100 is equal to 10 into 5 hb is 5 plus half v square so 100 minus 50 50 52 is 100 so v is equal to 10 yes so by this you are complete this one done conservation of mechanical is done now we have to go for power ka power easy लगेगा but यही हार्ड है थोड़ा पावर बोलेगा इजी है बट थोड़ा बिकॉज इसमें आपको पूरा कैरेमेटिक्स चाहिए ऑल दे लिंक विद दैट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एवरीथिंग दे लिंक पावर का ओके सो देखेंगे Sir, can you power of the force what Sir, I'll go get me a book. yeah Sir, 1 minute.
सो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर. कितना फास्ट से द वर्क इज डन और हाउ द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हाउ मच So, फास्ट द but रेट next ऑफ class एनर्जी. can we start circular motion? हाँ, इसके बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं. बट आपको टेस्ट में लेने वाला हूँ. कब ले आऊंगा? टुमारो शुड आई कीप आर रेडी फॉर दिस वर्क फॉर एनर्जी का अदर देन पावर? Yeah. Yeah, fine. Okay, so tomorrow I will take the from morning to night तक any time में you can write. I'll give the link Jyotish for you. उसमें you have to enter, you have to write the test from there and submit. That's it. उसमें. Okay. So rate of work, rate of doing work or rate of energy transfer. We have two types of powers. One is instantaneous power, other one is average power. Instantaneous power means the rate of doing work by a force at a given instant is called instantaneous power. Formula मालूम है ना? Rate of doing work is called power. How much fast the work is done, or how much fast the energy is getting transferred. That is called power. We have two types of power: instantaneous power and average power. Instantaneous power का formula देखें, derive करेंगे. देखो, P is equal to dW by dt. Work done by time is called power, right? Or energy by time is called power. And work is formula क्या है? F dot dr by dt. And what is dr by dt is called as velocity. F dot v. खत्म. Very important formula. Instantaneous power formula is F dot v is a formula for power. F dot v. Fv cos theta. If you expand, Fv cos theta is a power. And second one we have average power. Average बोलते हो आपको एक change in work by change in time or change in energy by change in time वाला. Okay, average power. Okay. Okay. This is a formula for power, insurance power. Next one is average power. Average power formula क्या है? The ratio of the total work done by total time taken is called average power. So power Total is कितना? just work. I mean, power is work into time or work by time Rate of doing work means work by time or work into time? into. Work by time. Okay. See, energy is power in time. Yeah, Power yeah, is energy by time. Okay. So average power का formula work by time or energy transfer by time. Very important. Energy transfer, some questions में kinetic energy transfer हो तो use half mv square by t. अगर some question में देखो पानी इधर से नीचे से अंडरग्राउंड में ऊपर तक जा रहा है बोलेगा, that time the work is done converted to potential energy. That time क्या करेंगे? एनर्जी ट्रांसफर की जगह में you have to use mgh by t. So एनर्जी ट्रांसफर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा. So power is energy by time. कौन सा सपोज एक एनर्जी ट्रांसफर इट इज स्प्रिंग पोटेंशियल इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. सो द एनर्जी ट्रांसफर टाइम में आपको यूज करेंगे हाफ एमवी स्क्वायर यूज करेंगे. पानी को ऊपर लेके जाने के बोल तो mgh by t यूज करेंगे. ओके. एंड पावर का यूनिट्स क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ पावर? वाट्स. वाट्स, राइट? लिखो. एंड स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पावर का. Power is a scalar quantity because dot product of any two vectors is always a scalar, right? Scalar quantity लिखो. SI unit is watts and other unit is horsepower. 1 horsepower is 746 watts. 1 horsepower is 746 watts. And same way आपको एनर्जी का यूनिट्स क्या होगा मालूम है? सो देखो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम. So from this, energy is equal to power in time. Very important. Energy equal to power in time. Power is watts or kilowatts, and time is hour. Suppose higher units I am seeing. So kilowatt hour is the SI unit of energy. Okay. Kilowatt hour is the SI unit of electrical energy. Formula is power into time is nothing but energy. Okay. Yes, sir. And 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 power of 6 joules. Three 3.6 into 10 to the power of 6 joules. This is answer.
ओके, आ गया पावर का. सो पावर का इंस्टेंटेनियस पावर इज F डॉट V इज अ फॉर्मूला एंड इसका एनर्जी बाय टाइम. चलो रेडी है, क्वेश्चंस करेंगे पावर का. एंड वन मोर थिंग यू अंडरस्टैंड, एफिशिएंसी भी लिख लो. एफिशिएंसी पावर इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100. आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 एफिशिएंसी. लाइक यू नो मोटर इज देयर, मोटर के ऊपर जो नेम प्लेट में लिखेगा दैट इज इनपुट पावर. नेम प्लेट में दे विल राइट दिस मच पावर इज देयर माय मोटर, दिस मच इज देयर बोल के इतना पंप करेगा ऐसा लगेगा. बट बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी लेस है तो क्या होगा, वो क्या है आपको 50% ओनली, 50 या 30% एफिशिएंसी बोले तो 30% ऑफ वर्क ओनली डूइंग दैट मोटर इज डूइंग वर्क. सो दे विल राइट देयर कितना एफिशिएंसी आल्सो दे विल राइट. सो जो रेटिंग में लिखा है दैट इज इनपुट पावर, जो एक्चुअली व्हेन यू आर यूजिंग फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह वो पूरा की वजह से आपको उतना काम नहीं करेगा. ओके, तो उसके वजह से कम 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 करेगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट पावर. आउटपुट So बाय this इनपुट into इनटू 100 is 100. in the numerator or denominator? व्हिच वन? 100. न्यूमेटर. आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर मान लो, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनपुट इनटू 100. दिस इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का रिप्रेजेंट एज ईटा, वी कॉल ईटा. ये आपको थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा ईटा. ओके, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100. चलो एक सैंपल क्वेश्चन देखेंगे, करो देखते हैं. ये ऑप्शंस द गिवन इन टर्म्स ऑफ पावर में. सो इसमें 3 ऑप्शंस लेंगे, उसमें आंसर इज देयर. सो क्वेश्चन देखो, द ऑटोमोबाइल ऑफ मास m एक्सेलरेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन. एक मतलब कार होने दो, कुछ भी होने दो, इट इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम ऑरिजिन इनिशियली एट रेस्ट while the engine supplies a constant power P. So engine है, engine is supplying power P. The position is given in function of time. The position is nothing but displacement in terms of time में चाहिए relationship. Find कर. So position means displacement, right? Like Yeah, displacement. देखो गाड़ी है, इंजन इज गिविंग द एनर्जी एंड दैट इंजन का एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. यूज दैट फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ द इंजन. So can't we It just converts- substitute from the options? व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? डिस्प्लेसमेंट Like the work from डायमेंशंस यूज करेगा. Yeah. है नो नीड, ऑल दिस मेथड समझो, ये तो यू नो बीच में सेम सेम रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. सो एनर्जी is equal to half mv square, right? Energy supplied by the engine is converting to energy, kinetic energy. Energy is nothing but power in time, because power terms में चाहिए ना, power into time is equal to half mv square. From this v is how much? V is equal to 2pt 2pt by by m Two. whole power 1 by 2, right? Why we want integration, sir, integration of v dv is v square by 2 or just v? v square by 2. Now आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यू नो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट ds by dt dt. connect. Now substitute 2pt by m whole power 1 by 2. So therefore ds is equal to You have to integrate. हाँ
whole power 1 by 2 into dt. So integrate both sides to get the displacement as a function of time. So जो constant है वो ले लो So we and should use t the will be there. That's it. right? Huh? Shouldn't we use the substitution method? By substitution method जो constant है वो निकाल दो. Displacement Sir, का s. T by M. Sir, T will vary from 0 to what? 0 to t only. There's no that function of time, right? 0 to t. Okay. So क्या होगा? S is equal to 2 constant, power constant, m is constant. So 2p by m whole power 1 by 2. Integrate t power 1 by 2. T power 1 by 2 का integration is t power 3 by 2 by 3 by 2. Right? From 0 to t. 0 to t means nothing but that one, right? T only. So क्या होगा? A 2 S is equal to ये कितना होगा 2 by 3, right? So 2 by 3 into or root 2 or under root 2p by m into t power 3 by 2. Sir, I Right. got the same. Yeah. So ये अंदर भेजूंगा because options में अंदर है ना. So अंदर क्या तो 2 square will be 4. 4 into 2 is 8. So 8p by 9m Oh, yeah, 4. Yeah, correct. 1 by 2 You get t 8t by 9m to the power 1 by 2 t power 3 by 2. Yes. So देखो ये तो energy is converted to kinetic energy बोल थोड़ा idea आने का. Then we can use the thing. At the power बोल के engine सभी engine is providing the energy, right? Is converted to kinetic energy. Use करो. ठीक है. थोड़ा similar model में दूंगा करो. Options I'll give. Based on options, you decide what to do. Same model. A body rest is moved with a 1 by 2. horizontal straight line. Machine No. delivering with the constant power. The Yeah. distance moved by the particle in terms of time. Distance I Sir, want in terms of directly time. proportional to s power 3 by 2 and v power 1 by 2. But for t, 3 by 2. So 3 by 4, I think. देखेंगे. I think. So because I remember our teacher telling that it's directly proportional to s power 3 by 2 and v power 1 by 2. So if I just divide 3 by 2 by 1 by 2, I get 3 by 4. You will Oh, see. wait, what? No, I'll get 3. Oh, never mind. So I say 1 by 2. Ah, no, sir. I'm feeling 1 by 2 is the answer. देखेंगे. Krish will tell. Correct. Same model. The body at rest is moved with a horizontal straight line by engine मान लो. So engine is giving with a constant power. Engine का वैसे is moving with kinetic energy, right? Same method follow करो. What is that? Energy is converted to kinetic energy, half m square. Because distance only is asking, right? No. Wait. Sir, then we'll No, have it's mass 3 by 2. flow. It's 3 by 2. It's 3 by 2. It's 3 by 2. It's 3 by 2. Finally देखेंगे. Tell me, Krisha. Sir, we'll have mass left, no? Mass, that's why proportionality में check करो always. Therefore, Okay. V kinetic energy is equal to E is power in time, right? Half mv square. That means m is constant, 2 is constant, p is constant. Options में आपको p terms में नहीं है. So constant power है ना? So निकाल दो. So V is proportional to what? T पर 1 by 2. इधर से करो. Proportionality वाली चेक करो. नहीं तो पूरा में बार बाहर लेना बहुत मुश्किल है. Now इसके जगह में what is ds by dt is equal to some constant c मान लो t पर 1 by 2. So therefore ds is equal to c t power 1 by 2 dt. Some constant I'm putting. So integrate to get displacement. S is equal to
सी कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ टी पर 1/2 इज टी पर 3/2 ऊपर 2/3 टाइम्स ऑफ टी पर 3/2. Yeah. So that means No, but displacement is you have proportional to. directly just write it written as like we got V is directly proportional to T power 1/2, right? And S is nothing but integration of V dt. So we हाँ can यार, directly that only like same. that. Yeah, that's what I did. मगर चेंज करते जा रहे हैं आप टी पर 3/2. So So sometimes I 3/2, remember that it was 3/1. V is directly proportional to T power half, but they asked distance, right? Yes. आया? Yes, sir. Yes. चलो करो. So पावर का सेम मत बट अंडरस्टैंड करके सॉल्व करो, हो जाएगा. नेक्स्ट. A body of mass m begins to move under the action of time dependent force. So F, how much they given? 6t I cap plus 6t square j cap. Okay, mass is given. The power delivered by the force at time t. Well, instantaneous power is asking. You know force power का formula F dot V. So कैसे भी करके V find करो, substitute and then solve. I'll give options. So work is integration of force, right? Work is integration of F dot R, F dot dr. भाई वर्क फाइंड करने का. So no, sir. If you find work, you can directly differentiate work with respect to time. Yeah, I can do anything. But displacement नहीं दिया. Velocity if you get then easy. तो मेरा acceleration से can get velocity. Right. Sir, I got 9TQ plus 6T power 5. Yes, perfect answer. Good. So here, how do you remove X? So, No, sir, can't we just find acceleration and acceleration force by mass, right? Force by mass means mass is given 2, right? Divide by 2 किया तो 3t I cap plus 3t square j cap. That's what I got. 90. No, acceleration आने के बाद how to get velocity? Tell me. याद है ना, displacement, velocity, acceleration. When acceleration time is given, how to find velocity? पीछे आए तो integration. Okay. So S is equal to integral a dt. So integral a dt क्या तो मतलब 3 का 3 बाहर t square by 2 plus 3 बाहर t cube by 3. So 3 cancel. Okay, 3 बाहर t square by 2. Okay. Now you got this one. The I cap j cap. I cap j cap. No, substitute just displacement velocity है ना, velocity, this is velocity, right? Velocity. So समझ रहे हो? I told you shortcut, right? Displacement, velocity, acceleration. When आगे गए तो slope, पीछे आए तो integration.
So when acceleration time is given, how to get velocity? Simply integrate. और नो डॉट प्रोडक्ट करो. चलो. $60 I cap plus 6t square j cap dot velocity is 3t square by 2 I cap plus t cube j cap. So dot product is I dot I is 1, right? So कितना होगा? 18 by 2 is 9 t cube I cap plus t power 5, 6 t power 5 j cap. So this is the answer. Last one. समझ में आ रहा है? Yeah, sir. डॉट प्रोडक्ट में आई नहीं आएगा ना. सॉरी, आई डॉट आई इज 1, राइट? सो दिस इज, दैट्स व्हाई आई एन जे इज नॉट देयर. सो दीज आर द थिंग्स इन द पावर में. आपको क्वेश्चंस आई विल पुट द कंप्लीट उसमें वेबसाइट में आई विल पुट उसमें